खुली ट्रिक बताता हूँ, जिसको यूज करनी है कर लो, तुम्हारे 1000 फॉलोवर ऐसे बढ़ जाने हैं 1-2 महीने के अंदर। तो देखो, सीधा करना है क्या यार, इट्स एक्सप्लोसिव। करना क्या है, जस्ट Hey guys, my name is Harsh and this is the seventh episode of the Visionaries podcast. So, everyone in our generation especially wants to grow a following on Instagram and like have a certain number of likes. And actually, people judge each other on the basis of number of followers on Instagram nowadays. So, the guest we have today is someone who's an Instagram expert and a social media marketer. Mohit Bhai, welcome to the Visionaries podcast. thanks us for calling me out on the show and inviting me, and such warm invite and some such warm introduction. First of all, I'm no expert. I'm just sharing what I'm learning and helping out you people. No, bhai, you have much knowledge about this field than most of the persons I know, than most of the people I know. It's just execution and consistency, but thanks for that. Also, before getting into the podcast, make sure you do subscribe to the channel and like watch this video till the end because in the end, Mohit bhai will give us three tips to grow followers on Instagram. So like, do watch it till the end and do listen it till the end if you're listening it to on any other audio platforms. Also, Mohit Bhai is actually one of those persons whom I go to when I have any problems with Instagram or like any other social media. And actually, that's almost daily. Every day कुछ कांड हो जाता है and I'm like मोहित भाई कुछ हो गया आप क्या करें. No, but honestly, Mohit Bhai, actually, yeah, I haven't told this to anyone, but you are actually one of those persons whom I admire a lot when it comes to the Instagram field and all that because you execute your work daily and it's not like any other marketer who's sharing knowledge just to share knowledge. You are building an emotional connect with people, so that's the thing which I like about you the most. This is the line, that building the emotional connect with people. This is the line I was waiting for last 6 months. Ki who will tell me that you are actually connecting with people, not sharing the knowledge? People are like, Mohit is sharing Instagram knowledge. No, I'm building community over there. Exactly, That's exactly, what I'm. exactly. So, let me get into the podcast straight now because I will ask you a very basic question just to give the audience a bit of knowledge about Instagram. That if a person is not on Instagram in 2020, then like what is he missing out? Missing out everything, because let me tell you who is not on Instagram. First of all, like there are 2 billion, like 1 or 2 billion people there are on Instagram, like 1 billion active users every month are there on Instagram, and we have 7 billion of the world's population. And if you are not on Instagram, first of all, why you should be on Instagram? Instagram has business, Instagram has people, Instagram has friends, Instagram has popularity, Instagram has money, Instagram has everything. You wanna go on you wanna go on YouTube? Come on Instagram. There is IGTV. If you wanna go on TikTok, come on Instagram. There is Reels. If you wanna go on Facebook, come on Instagram. There are photos. If you wanna go on Snapchat, come on Instagram. There are stories. Instagram has taken over everything, man. Everything. Why not on Instagram? They are missing out everything, I would say. Like if you are a person, I'm just waiting when Instagram will become a marketplace just like Amazon and Flipkart. it will, no doubt. It is already. But it's like you have to sell your own thing. But Instagram is not taking care of that thing. Like there are many pages which are selling first copy shoes and bags and t-shirts all over Instagram. They don't have money to buy the domain name or website. They are selling on Instagram and heavily. So Instagram is amazing. So, if someone is on Instagram and he has just started out putting out content, then what is the one thing he should focus on more, like quality, quantity, what? Okay. It's not the basic question, like it's a generalized question for each and every person. Like it will be different for you, it will be different for me. अगर आप start कर रहे हो, तो if obviously your content is not that good when you are starting out, okay, because it will build like it will be improved by the time. My first video was very funny. I made it very seriously.
I Yeah. I was sharing my knowledge very seriously, but it's actually very funny because like whenever I feel low in these times, I just go watch my first video and I laugh a lot. It's disgusting. So your first video will never You be know, that. this thing I've heard it from many influencers and like many YouTube stars or anyone that the first video they make at that time when they make it they feel it like wow, like ye video, this is the best video. And then after a short span or around like 1 year or so, when they look that video, they are so devastated. I'm like, why did I put out that? एक्चुअली और भाई सबके साथ होता है अपना पहला स्टार्टअप सबको लगता है स्काई रॉकेट मारेगा बट पहला बिजनेस किसी का वैसा होता नहीं है लकीली इफ यू गेट एंड इफ तो पर हाँ अगर आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हो देन डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी डोंट फोकस ऑन क्वालिटी बिकॉज इफ यू फोकस ऑन क्वांटिटी आप गंदी वीडियोस बनाते रहोगे बिकॉज आपको नहीं आती अभी इतनी और अगर आप फोकस करोगे क्वालिटी पे तो आप वीडियो बनाओगे ही नहीं क्योंकि आपकी वीडियो में भी क्वालिटी नहीं है तो ना तो आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है ना क्वालिटी पे फोकस करना है आपको फोकस करना है लर्निंग पे आप अपनी वीडियो बनाओ अपनी वीडियो को दोबारा देखो उससे सीखो फिर दूसरी वीडियो में इम्प्रूव करो द गोल इज टू बी बिल्कुल बेटर द नेक्स्ट डे देन yesterday दैट्स इट ट्रू ट्रू दैट वेरी ट्रू सो भैया अभी तो लाइक टिकटॉक तो देयर इज नथिंग कॉल्ड टिकटॉक एनीमोर इन इंडिया वी हैव रील्स एंड ऑल दैट बट the most used platforms right now is YouTube and Instagram. So which platform do you think is better to build a loyal audience, YouTube or Instagram, and why? That's actually a great question which no one asked me. Like everyone is asking, should we go on YouTube or Instagram? But no one is talking about a loyal audience. Loyal audience, if we talk about YouTube has more loyal audience. If I tell you why, because YouTube is something where people are putting out videos 10 minutes, 15 minutes, and Instagram is something जहाँ पे आपके 60 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लाइक इंस्टाग्राम के आईजीटीवी पे आपके 5 मिनट के ऊपर वीडियो बहुत रेयर होगा कि कोई देखेगा बहुत रेयर जब तक आप बहुत बड़े क्रिएटर ना हो वही जब तक हाँ आप गैरी वी नहीं हो कोई नहीं देखने वाला तो पर यूट्यूब पे आपके 10 मिनट की वीडियो भी लोग देख रहे हैं मेरे 50 मिनट्स के पॉडकास्ट यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं 50 मिनट्स के हाँ पॉडकास्ट और यहाँ पे आईजीटीवी के 6 मिनट की वीडियो नहीं देख रहे हैं दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन वहां पे ऑडियंस है ठीक है वही ऑडियंस वहां जा रही है बट वहां उनकी लॉयल्टी है बिकॉज यूट्यूब के पास एक इमेज है कि यहाँ पे अगर बंदे ने डाला है तो वो लंबा डालेगा ऑडियंस हैज अ पेशेंस ओवर देयर सो और लॉन्ग टाइम में ऑडियंस आप बहुत अच्छी बिल्ड कर सकते हो इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे जाए ना जाए आपकी ऑडियंस पर यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे आपकी ऑडियंस आ जाएगी बस आपको ट्रू यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहना ट्रू है दैट बिल्ड द कम्युनिटी एक्चुअली ओवर देयर ये सेम बात मेरे को ना वन ऑफ आई थिंक एपिसोड 5 में द वन जिसके साथ मैंने पॉडकास्ट शूट किया था शायन भैया इवन ही टोल्ड मी द सेम दैट यूट्यूब से लोग इंस्टाग्राम पे जाएंगे there's people build brands on YouTube and then become influencers on Instagram, and it's like most of the time it happens like that only. ट्रू मैन एग्जैक्टली ट्रू Yeah, yeah, yeah. So the next thing which Instagram took out is Instagram Reels after like in a very good time and at a very good space for India when TikTok is not there and there's a void in the industry. So how do you think that Instagram Reels will grow in long term? Secondly, adding to the same question, how do you think that content creators should put out 15-second videos and like how do they not how does Instagram Reel not become TikTok? Basically, the question is how Instagram Reels should not be TikTok, but it's already become. It has already become, trust me. Because I have seen people putting out cringe videos on Instagram Reels. I just made you saw one. I just told you one, है ना दिखाया था अभी. So हो क्या रहा है लोगों ने सीन क्या हुआ जिस दिन टिकटॉक का बैन का आया कि टिकटॉक इज गोइंग टू बी बैंड इन इंडिया so after 24 hours TikTok got banned TikTok gave them a time limit of 24 hours and लोगों ने क्या किया उनके जितने टिकटॉक वीडियोस थे सबके सब डाउनलोड कर लिए अपने फोन में और अब वो इंस्टाग्राम रील्स पे डाल रहे हैं बढ़िया से
क्योंकि उनकी तो मेहनत है उसमें, उनको लगता है उनकी हाँ मेहनत है। अब जिन्होंने अच्छा बनाया तो उन्होंने डाला, बहुत अच्छी बात है। पर जिन्होंने हाँ। अच्छा नहीं बनाया तो उन्होंने तो वही डाल दिया वापस। एंड दे आर पुटिंग लाइक 10 वीडियोज अ डे, 5 वीडियोज अ डे, 4 वीडियोज अ डे, हम्म और वो फीड पे आया ही जा रहा है। एंड इनफैक्ट पता है, मैं इंस्टाग्राम रील से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रीज़न वाई? बिकॉज जो पोस्ट है ना, पोस्ट बनाने में हमको क्या, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अगर हम बनाते हैं 1 मिनट का या आईजीटीवी का 5 मिनट्स का या 2 मिनट्स का, तो उसमें हम्म टाइम लगता है। हम्म आपके कट्स आते हैं, आप एडिट्स करते हो, दिन भर निकल जाता है हमारा। बट इंस्टाग्राम रील इज लाइक 15 सेकंड, और मेरी फीड पे भी वो नहीं दिखेगा, पर मेरी वो न्यूज़ फीड में मेरे फॉलोअर्स को दिख जाएगा। हम्म तो हम्म मैं हफ्ते भर अगर कंटेंट पहले नहीं डालता था, मान लो आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम, और मैं हफ्ते भर कंटेंट नहीं डाल रहा इंस्टाग्राम पे, हम्म, तो मेरी पोस्ट एकदम खाली रहेगी। मेरी फीड पे हाँ मैं लोगों को नहीं दिखूंगा, एकदम मैं हाँ। वैनिश हो जाऊंगा, और लोग मुझे हम्म अनफॉलो करना शुरू कर देंगे। बट ड्यू टू रील्स मैं कंटेंट नहीं डाल के भी प्रेजेंस बना सकता हूँ अपनी एक 15 हम्म। सेकंड की वजह से। So it's ट्रू। easy to make reels. You should use reels because as you asked कि reels explode होगा या नहीं, it's already exploding friend. It's like already exploding. Like परसों मेरा एक reel 1K views क्रॉस हुआ था उसमें। मेरी आज तक कोई भी आईजीटीवी में 1K व्यूज क्रॉस नहीं हुए, उस रील में हुआ। इट हैज़ बीन शेयर्ड लाइक हेल। और मतलब बहुत लोग, अभी मैंने देखा एक हेट वीडियो भी आया उस पे। सो इट्स लाइक एक्सप्लोडिंग। एंड आई ऑल्सो सॉ अ गाय हाइड्रोमैन, जो कि टिकटॉक पे बहुत अच्छा कर रहा था, एंड ही इज पुटिंग हाँ। आउट रील्स, और उसकी रील्स पे 1 मिलियन व्यूज, The थ्री guy मिलियन who व्यूज was dancing on the inside like the water tank, right? Even I saw that. That's actually featured. ही हैज मिलियंस व्यूज ऑन रील्स। Hmm. लाइक रील्स की व्यूज आईजीटीवी से भी ज्यादा आ रही है, तो यूज रील्स राइट नाउ। छोड़ो मत उसको, यूज इट। Hmm. True that. One more thing जो मैंने किसी से नहीं सुना कि इंस्टाग्राम रील्स के बाद हैव यू सीन दैट जो हम लोग का पोस्ट्स है द नंबर ऑफ पोस्ट डोंट राइज इफ यू पोस्ट अ रील। मतलब समझा नहीं मैं, व्हाट डू मीन बाय मतलब जो हम लोग का इंस्टाग्राम में वी हैव फॉलोअर्स फॉलोइंग एंड नंबर ऑफ पोस्ट्स राइट। दैट? So whenever we post a reel, the number of posts don't rise. They are like जो Instagram feed में जितना पोस्ट है वही दिखाएगा, पर रील्स में छह छह रील्स डाला तो मेरा छह बढ़ेगा नहीं। सो वो एक चीज आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि व्हेन पीपल सी दैट सपोज समवन हु स्टार्टिंग आउट कंटेंट वेरी रिसेंटली, उसने छह रील्स डाला और उसका नंबर ऑफ पोस्ट में छह आया, फॉलोअर जीरो, फॉलोइंग जीरो, एक अंदर से वो हो जाएगा, अरे यार मैंने तो छह कंटेंट बनाया पर मेरे को कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ पोस्ट स्टैटिक है, उसको चेंज नहीं किया। सो दैट इज अ गुड थिंग विच आई थॉट अबाउट रील्स। एग्जैक्टली, इनफैक्ट इंस्टाग्राम का यही सीन है कि आप जो आईजीटीवी भी डालते हो और उसमें रिमूव प्रीव्यू कर देते हो ना, प्रीव्यू रिमूव हाँ कर देते हो, तो आपकी हाँ। फीड पे नहीं दिखता। आईजीटीवी का अलग सेक्शन है, उसके अंदर जाता है, तो वो भी वहाँ पे एग्जैक्टली। काउंट नहीं होता। रील्स का भी अलग सेक्शन है, वो भी काउंट नहीं होता। और अगर आप हाँ स्टार्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो आप रील से स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी फीड पे नहीं दिखेगा। तो कोई आएगा तो वहाँ दिखेगा तो है नहीं। जिन लोगों को दिखेगा वो है कौन, वो या तो आपको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो आपका तो फायदा है। यू आर एट जीरो, लाइक नेगेटिव सिचुएशन तो है ही नहीं। इट्स अ विन विन सिचुएशन। या इट्स अ विन विन सिचुएशन। स्टार्ट रील, अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो। ओके ओके भाई। सो अभी इतना इंस्टाग्राम, इतना सोशल मीडिया एंड लाइक इट्स बूमिंग एंड इट्स बूमिंग। मतलब कोई अभी फिलहाल तो कोई स्टॉप नहीं है, दैट देयर इज नो एज कि ये बस यहाँ पे अब इसके आगे नहीं चलेगा। देर वी कांट सी दैट एज। बट इतना लोग इतना अंदर घुस रहे, देर आर केसेस ऑफ डिप्रेशन कमिंग आउट एज वेल, कि लोग मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं। सो हाउ डू यू थिंक दैट इंस्टाग्राम इज अफेक्टिंग पीपल मेंटली? Instagram is affecting people a lot. But because I talk about mindset also sometimes, हम्म not socially on social media, but हम्म with my friends or with the people who are on Instagram, they do take consultation about mindset too with me. So हम्म I know that it's not about Instagram. आज इंस्टाग्राम है, कल कोई और होगा, परसों कोई हम्म और होगा। द सोशल मीडिया platforms are going to come in again and again. It's you who is affecting you. There are people who are just coming on Instagram for 1 hour. There are also people who are coming on Instagram for 11, 12 hours. There are हम्म people who doesn't get affected with number of followers. There are people who get obsessed on the number of followers. Like yesterday my followers were 1200.
and after 2 hours I saw it was 11.99. I was like, who unfollowed me? I want him back. So it Exactly. happens, and it's you who is affecting you, not Instagram is affecting you. So, but True to that. that. So what's the way to overcome that? मतलब वो mentality कैसे हटाए कि अरे यार मेरा एक follower चला गया, ठीक है चला गया. Like how to get that? the only way to get that is changing your objective. If your objective is gaining followers, becoming an influencer, then you can't get over it. It is Mm, going to affect you because your objective is that. अगर आपका mm, ऑब्जेक्टिव है मेरे बिजनेस को बड़ा करना है और आपके बिजनेस में लॉस होगा तो अफेक्ट होगा ना, रोक नहीं सकते उसको। तो अगर true that. ऑब्जेक्टिव ही यही है कि फॉलोअर बढ़ाना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, ब्रांड बिल्ड करना है, बिल्कुल अफेक्ट होगा। बट अगर ऑब्जेक्टिव है लोगों को हेल्प करना है, कंटेंट को इम्प्रूव करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, चाहे चार लोग हैं पर चार ऐसे हो जो आपके लिए जान देने तैयार, आई मीन नॉट जान, बट आपकी पोस्ट शेयर करने तैयार हो True. या आपके हाँ. कमेंट करे या जिस तरह से भी। तो Mm, दिस शुड बी द ऑब्जेक्टिव, एंड व्हेन दिस इज द ऑब्जेक्टिव आपको फर्क mm, नहीं पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। आई एम प्लानिंग आउट टू गो ऑफ सोशल मीडिया फॉर 1 वीक, एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल विल अनफॉलो मी बिकॉज मैं पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक हफ्ते तक। आई नो 100, एटलीस्ट 100 पीपल विल अनफॉलो मी। mm, बट द थिंग इज दोज अदर पीपल लाइक 1200 में से 100 निकल गए और 1100 जो वहां बैठे हैं ना, those are the mm, people who are loyal to me and waiting for my post and I want them, right? mm, परसों मैंने अपने 85 फॉलोअर्स को रिमूव किया है, जो कि घोस्ट mm, फॉलोअर्स थे जिन्होंने कभी भी इंटरेक्ट नहीं किया, जो पबजी mm, पेजेस थे जो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड दे वर अफेक्टिंग माई एंगेजमेंट। आई वॉन्ट राइट mm, ऑडियंस, नॉट द ऑडियंस। आई वॉन्ट राइट फॉलोअर्स, लॉयल फॉलोअर्स, नॉट द mm, फॉलोअर्स। दैट शुड mm. बी द ऑब्जेक्टिव। True that. True that, true that. Okay, so my last question and the most awaited question is like how to grow followers on Instagram. If you can explain in like three, four steps, the main points. ओके, राज खुलवाओगे तुम? ठीक है, चलो। So, ठीक है, I will not say any diplomatic answers. I will say Yeah. practical tips because लोग कहते हैं consistent रहो ये वो, चलो वो सब that is important, being And you will hear this only on the Visionaries podcast. So अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो पहले. that is important. And yeah, this is also a way to grow on Instagram also. Be a shameless self promoter. Always be that. Like I have seen, like मैं बताता हूँ ways if you ask for three posts है. First of all, just don't put out content. Try to put out the content which your audience want to know about you. Like audience want to connect. उस Mm, audience को जानना है. So try to put out mm, that content. Don't be shameful in asking for comments or like. Do ask for that. लोग करना चाहते हैं बस वो भूल जाते हैं, लोग कमेंट करना चाहते हैं बस वो भूल जाते हैं। आप उनको याद दिलाओ लास्ट में कि डू कमेंट हियर इफ यू आर एट द लास्ट। तो उसके बाद हाँ. नेक्स्ट नेक्स्ट इज पुट आउट मोर एंड मोर स्टोरीज, कनेक्ट विद पीपल। क्वांटिटी आल्सो मैटर्स, बट लोगों की सुनो। जितना ज़्यादा रिजल्ट्स Mm, हो सकता है, कोई इंसाइट्स को शेयर नहीं करता, कोई रिजल्ट्स को शेयर नहीं करता, कोई इमोशनली कनेक्ट नहीं करता, वो चीज़ पे ध्यान दो। तीसरा mm, तीसरा सबसे, Do you think that sharing your insights on your stories is a good thing? यस इट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग बिकॉज इफ okay. यू डोंट टेल पीपल कि आपको कुछ आता है तो कैसे लोग बिलीव करेंगे, राइट? Mm, या इफ आई आस्क यू, अगर तुमने मुझे बताया लाइक तुम मुझ पे बिलीव करते हो कि आई कैन टेल यू अबाउट इंस्टाग्राम, व्हाई डू यू बिलीव इन मी? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू सम टिप्स अबाउट इंस्टाग्राम, आई हैव शेयर्ड मैनी थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, तो आई एम mm, ट्रांसपेरेंट ओवर देयर, दैट्स व्हाई। द थर्ड थिंग could be third thing could be which I made a mistake you should not. When you are starting out on Instagram, the most important thing is connecting with people. मैंने क्या mm, किया, मैंने दूसरे क्रिएटर से कनेक्ट नहीं किया। आई वॉज बिल्डिंग माई ओन लेगेसी एंड आई वॉज बिल्डिंग माई फॉलोअर्स। बट mm, द मोस्ट रॉन्ग थिंग इज दिस, जो मैंने की वो सबसे गलत चीज है। वाई? बिकॉज इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन द क्लास यू आर इन द रॉन्ग क्लास। यू शुड नॉट बी exactly. स्मार्टेस्ट इन द क्लास, या अगर मेरी पूरी की पूरी फॉलोअर लिस्ट के अंदर सिर्फ मैं सबसे स्मार्ट हूँ और मैं सबको बता रहा हूँ तो आई एम इन द रॉन्ग क्लास। आई नीड पीपल हु कैन Mm, टीच मी, mm, राइट? true that. सो उनसे कनेक्ट करो जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, और उन वो खुद में खुद आ जाएंगे, जो आपसे कम जानते हैं वो अपने आप आ जाएंगे। सो कनेक्ट विद पीपल मोर, दैट इज द way to grow on Instagram. And there are And hell one lot more of tip. strategies. Okay, one more tip. Okay, I should give you the best tip.
The best tip, the best tip, the best tip. Okay. Uh, put your time in engaging with people. मैं खुली ट्रिक बताता हूँ, जिसको यूज करनी है कर लो, तुम्हारे 1000 फॉलोवर ऐसे बढ़ जाने हैं 1-2 महीने के अंदर। तो देखो, सीधा करना है क्या, यार इट्स एक्सप्लोसिव। करना क्या है, जस्ट गो टू ऑल द क्रिएटर्स इन योर लिस्ट। अगर आपके 1K फॉलोवर्स है, 2K फॉलोवर्स है, तो अपने अराउंड के फॉलोवर्स पे जाओ, जिनके 500 है, 2K, 3K, 4K, 10K तक में जाओ, और हम्म उन सब की पोस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। ठीक है। और उन सबको जो है अपनी मैसेज की फ्लैग लिस्ट में डाल दो। पहले तो उनसे कनेक्ट करो विथ मैसेजेस, अपने डाउट है तो क्लियर करो। 500 हम्म वाले कम फॉलोअर वाले हैं, तो उनकी प्रोफाइल में कोई दिक्कत लग रही है तो उनको हेल्प करो। फिर उनको हम्म अपनी फ्लैग लिस्ट के अंदर डाल दो, और नोटिफिकेशन हम्म सबकी ऑन कर दो। हर एक बंदा हम्म रोज रोज पोस्ट डालता है। जैसे ही वो पोस्ट डाले, गो ऑन देयर पोस्ट एंड कमेंट समथिंग वैल्यूएबल ओवर देयर। ओके। कमेंट हम्म समथिंग वैल्यूएबल। और आपका सबसे पहला पोस्ट रहेगा ना, तो वो 10,000 जिसके फॉलोअर्स है, तो उसके पास बहुत सारे आते होंगे कमेंट्स, तो आपका जो पहला रहेगा, चांसेस है बहुत लोग आपके उस कमेंट को पढ़ेंगे। आपका कमेंट ट्रू वैल्यूएबल है तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे। तो दिस इज हम्म समथिंग विच इज वर्किंग फॉर मी राइट नाउ। सो यू शुड ट्राई दिस। आपको किसी और ट्रिक की जरूरत नहीं। पोस्ट डालो, ये करो, मस्त मजे करो। थैंक यू मोहित भैया फॉर ज्वाइनिंग इन द पॉडकास्ट। इट वाज बहुत अच्छा लगा आपको लेके पॉडकास्ट में, एंड आई थिंक ऑडियंस को, जिसको इंस्टाग्राम में ग्रो करना है एंड लाइक बिकम एंड लाइक एन इन्फ्लुएंसर एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, दिस पॉडकास्ट विल हेल्प यू अलॉट। सो इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन डाउन देयर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, अब तो कर लो। Want to speak something? या Great. So yeah, all the people listening to this podcast, do follow Harsh right now. Harsh is like, मेरे को इसकी थैंक एडिटिंग यू इतनी शानदार लगती है। इसकी जो क्रिएटिविटी देख, जो तुम करते हो ना, जो क्रिएटिविटी है, चाहे से इस एडिटिंग में, चाहे तुम्हारे थंबनेल्स के अंदर, चाहे तुम्हारे विजनरी शो वाले चैनल में, यूट्यूब के न्यूज़, या अपने खुद के पर्सनल प्रोफाइल में जो प्ले डेट और उन सब के साथ मिक्स करते हो। So those things are like not the editing part, that's the creativity part. You are lot creative, man. Hell lot थैंक creative. यू मजा आता है तुम्हारा content देख के। So guys, if you are from my audience, do follow Harsh right now. YouTube इंडिया की कोई न्यूज़ चाहिए, ये बंदा इधर बैठा है, जाओ इसका पॉडकास्ट थैंक यू देखो। सो मच थैंक यू सो Thanks मच Harsh भैया for थैंक यू calling me out here. Amazing, man. Thanks a lot. इट्स माई प्लेजर भैया थैंक यू सो मच